Hello students, today's topic is theorems on moment of inertia. Why we use these theorems? When moment of inertia of a body about a given axis is known, then we can calculate the moment of inertia of the same body about any other axis using theorems on moment of inertia. तो हम इसमें दो थ्योरम पढ़ेंगे यूजिंग द थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया. फर्स्ट थ्योरम इज थ्योरम ऑफ perpendicular axis, और सेकंड थ्योरम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे हम थ्योरम ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस. थ्योरम ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ ए प्लेन लेमिना के लिए, फिर 3D बॉडी के लिए भी पढ़ेंगे. तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ऑन ऑफ ए प्लेन लेमिना. प्लेन लेमिना. तो फर्स्ट इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis perpendicular to plane of the lamina. Suppose this is the lamina. If we want to find the moment of inertia about an axis that is perpendicular to the plane of lamina, ठीक है. तो the moment of inertia about an axis perpendicular to plane of lamina, ठीक है. The moment of inertia about an axis perpendicular to the plane of lamina is equal to sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes of the lamina in its own plane, and intersecting each other at the point where the perpendicular axis passing through it, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है? इफ़ यू वांट टू फाइंड दैट, लेट्स सपोज इट इज़ द प्लेन लेमिना. इफ़ यू वांट टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस टू इट्स प्लेन, देन it is equal to the sum of moment of inertia about two axes mutually perpendicular to each other. One suppose this axis, another it's perpendicular this axis. दो mutually perpendicular axes होंगे in its own plane, उनका जो sum होगा, और that axes are intersecting each other at the point where this perpendicular axis is passing through it, then the sum of the moment of inertia about these perpendicular axes in its own plane is equal to the moment of inertia about its perpendicular axis. So proof of this theorem is as this is the statement. Now proof, उसके लिए क्या करेंगे? हम एक प्लेन लेमिना ड्रॉ करते हैं. लेट इट इज़ ए प्लेन लेमिना and it lies in YZ plane, that is y axis, and this is x axis. Suppose it lies in XY plane and Z axis is perpendicular, this is Z axis
as shown here, that xy plane is this is x-axis, yeah, this is x-axis, this is y-axis, the plane of the lamina is xy plane के अंदर lamina है, और we want to find the moment of inertia of this plane lamina lies in xy plane about an axis that is perpendicular to, ये आपका z axis हम यहाँ पे शो कर देते हैं, z axis is perpendicular to the plane of lamina and these are two mutually perpendicular axes, one is x axis, one is y axis, ये mutually perpendicular to each other. We want to calculate moment of inertia of this plane lamina in xy plane about an axis z axis that is perpendicular to x and y axis. So the moment of inertia about z axis is equal to sum of moment of inertia about x axis and y axis. These are mutually perpendicular axes lies in the plane of lamina, then sum of the moment of inertia about these axes is equal to the sum of moment of inertia about an axis that is perpendicular to the plane of lamina and passing through intersection of these two axes. तो ये हमें प्रूव करना है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल पोजीशन m1, सेकेंड एट मास m2 हैविंग पोजीशन वेक्टर क्या है r1, second particle has the position vector r2, and let us suppose an ith particle having position here and this particle has the position vector ri. So we can draw the perpendiculars from this on y axis and on x axis. This distance is yi and this distance is xi, or from here this xi to this distance is also xi. To square of using this is perpendicular. So as we know ri is equal to ri square is equal to पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके that is xi square plus yi square. तो हमें जनरल अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहेंगे अबाउट z एक्सिस, that is I about z axis, what will be the वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस. तो उसके लिए क्या होगा, ये जेड एक्सिस है, इससे ये जो पोजीशन है ith पार्टिकल की ये आर आई है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, दैट इज़ m1 r1 स्केयर प्लस m2 r2 स्केयर अप टू mn rn स्केयर. ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस. अब हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज समेशन mi ri square, where I going from 1 to n number of particles in the lamina, this that is summation I going from 1 to n. और ये अगर हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे ri स्क्वायर की वैल्यू रख दो पाइथागोरस थ्योरम से जो ये रिजल्ट यूज़ किया था, दैट इज़ xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर. ये अलग ओपन कर दो, i a 1 to n mi xi स्क्वायर प्लस mi yi स्क्वायर. इसको भी अलग अलग से लिख सकते हो आप, ये हो जाएगा समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 टू n mi xi स्क्वायर प्लस समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 टू n mi yi स्क्वायर. अब आप क्या देखोगे, अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस चाहिए तो क्या होगा, ith पार्टिकल की पोजीशन फ्रॉम y एक्सिस दैट इज xi. तो mi इंटू xi स्क्वायर अगर आप देखोगे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस क्या होगा, पोजीशन ऑफ ith पार्टिकल इज xi परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द yth पोजीशन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस समेशन i1 to n, that is the moment of inertia about y axis. And if you want to find the moment of inertia about x axis, then formula of moment of inertia is the position of ith particle mi perpendicular distance that is yi, so square of the perpendicular distance and summation I going from 1 to n. These are the moment of inertia about x axis and y axis. So this is the moment of inertia about y axis and this is the moment of inertia about x axis. So this is the proof of the moment of inertia of perpendicular axis. Here ix and iy are the two mutually perpendicular axes lies in the plane of lamina
and z axis is the perpendicular to its plane, then moment of inertia about the z axis, ठीक है, is equal to sum of moment of inertia about two perpendicular axes lies in the plane of the lamina, that is x and y, intersecting each other at the point where the perpendicular axis is passing. Thanks for watching.